Hello students, welcome back to a new video of our Python series, and in this video we are going to talk about a program which will help us find the volume of a cube. ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इस प्रोग्राम की मदद से। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट। सबसे पहला क्यूब क्या होता है? ए फिगर जिसका सारा साइड जो है वो हमारा इक्वल होता है। ओके ओके, सो दिस इज ए क्यूब जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? साइड का क्यूब, विच यू कैन ऑल्सो राइट इट एज साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो एक ही बात है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट द साइड फ्रॉम द यूजर। यूजर साइड देगा तब तो उसका क्यूब निकाले। सो इनपुट फंक्शन वैल्यू लेता है। ये मैसेज डिस्प्ले हम लोगों ने करा दिया। इनपुट फंक्शन किस फॉर्मेट में वैल्यू लेता है अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, जैसे प्रीवियस वीडियो में बहुत बार मैंने डिस्कस किया। आप कमेंट करके बताओ इनपुट फंक्शन किस फॉर्मेट में वैल्यू लेता है और क्यों हम लोग यहाँ पे फ्लोट लिख रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट करके बताओ। ओके, now we are finding the volume, so we need to store the answer in a variable. For that we have created a variable called volume. बाकी आप नाम कुछ भी रख सकते हो। I have kept it as volume। आप v रखो, a रखो, b रखो, जो इच्छा आप रख सकते हो। Okay, now how to find the volume? The formula is side cube. So side हम लोगों ने इस वेरिएबल में रखा था, so that's what we have written here. This is called exponentiation operator। और ये वाला क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है? साइड का क्यूब। Okay, now we have got the answer, saved it inside a variable called volume. Now we want to see the answer. For that, write print statement, and then we have displayed a message on the screen, volume equal to, और किस वेरिएबल में आंसर है? तो ये वॉल्यूम नाम के वेरिएबल में आंसर है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। ओके, सॉरी। So let's practically do this question and see if it is working or not. So for that we need to open our IDE. We are using VS Code. So ये पिछला प्रोग्राम को हम लोग कमेंट कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स आस्क फॉर द साइड फ्रॉम द यूजर। यूजर साइड देगा, उसको हम लोग एस में स्टोर रखेंगे। तो एस इक्वल टू फ्लोट इनपुट, एंड देन मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, एंटर द साइड ऑफ द क्यूब। ओके, सो यूजर ने क्यूब का साइड दे दिया जिसको हम लोगों ने एस नाम का वेरिएबल में रखा है। अभी हमें एक और वेरिएबल बनाना है जिसमें आंसर स्टोर करेंगे। तो क्या वेरिएबल बना दे? VOL नाम का बना देते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू, द फॉर्मूला इज व्हाट? साइड क्यूब। साइड वी हैव स्टोर्ड इन वेरिएबल कॉल्ड एस। क्यूब करने के लिए एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर एंड दिस 3। ओके, नाउ लेट्स सी द आंसर ऑन द स्क्रीन। फॉर दैट वी नीड प्रिंट स्टेटमेंट और एक सुंदर सा मैसेज, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू और कोलोन कॉमा, कौन से वेरिएबल में आंसर है? VOL में। So we are done with our program. Now what we need to do is we have to run it. Go to this play button, press and enter the side of the cube. It is asking for the side of the cube. So let's say side I have given 5. ठीक है, enter the above. तो volume of cube is 125. So it is showing the correct answer. 5 का cube 125 ही होता है। Okay. So I hope this video is clear to you, and if you are having any doubt, you can just write it down in the comment box. And don't forget to give the answer of the question which I have asked in this at the starting of this video. ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो उसका आप आंसर करो कमेंट करके। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव ए थम्स अप, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।